Ladies and gentlemen, it is a pleasure कि हमारे साथ फिर से अली अहसन, editor of footballpakistan.com, the great brain on Pakistani football, makes his second appearance on Pressing Matters, brought to you by On the Mic. footballpakistan.com. मुझे हमेशा लगता है कि मैं footballpakistan.com को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, और करता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर एनी वन हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी फुटबॉल ऑलरेडी knows about them. But they're the main hub of Pakistani football, have been for years. If you for some reason haven't checked them out still, पहले तो भाई क्या कर रहे थे इतने साल, बट ऑन अ मोर इम्पॉर्टेंट नोट, गो चेक देम आउट राइट नाउ. इनके पीछे ही नाउ प्रेसिंग मैटर्स एंड ऑन द माइक इज़ ऑल्सो कवरिंग पाकिस्तानी फुटबॉल एंड ट्राइंग टू promote it, bring it to your screens, bring it to your homes, and trying to do it the service that I think it deserves. Today, I'm going to talk to Ali about domestic football that has finally been happening in Pakistan recently. First of all, Ali, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का for the second time and taking out the time. It's an absolute pleasure as always. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे फिर इनवाइट किया. इसका अब वही बात है ना, देखें, नॉट एवरीवन नोज अबाउट एफपीडीसी बिकॉज नॉट एवरीवन फॉलोज पाकिस्तानी फुटबॉल इटसेल्फ, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तानी फुटबॉल को मोस्टली हम कवर करते हैं. तो इट्स नॉट, आई डोंट ब्लेम देम फॉर नॉट नोइंग अस, बट जो कम से कम पाकिस्तानी फुटबॉल फॉलो करते हैं जिस लेवल पे भी हो, they probably know us one way or another through good things and through bad things as well, because we set the record straight as much as we can and try to report the facts on the ground, or at least cover what's in the press over there. So किसी की लॉबिंग का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते, and we like to keep it that way. और ये भी कभी कभी एतराज़ लोग कर जाते हैं कि आप किसी लॉबी का हिस्सा क्यों नहीं है, आप हमारी लॉबी का हिस्सा क्यों नहीं है. बट जनरली, एज ऑल ऑफ यू माइट नो, द PFF B डिवीज़न जो फॉर्मली कहलाती है द PFF लीग, उसकी क्लब लेग जो है वो ख़त्म हुई है रिसेंटली लास्ट वीक. बलोच FC क्वेटा की जो टीम है वो 6 टीम्स में से टॉप आए इन द क्लब लेग, एंड दे आर नाउ प्रमोटेड टू द पाकिस्तान प्रीमियर लीग. पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू बलोच FC, ग्रेट एफर्ट. एंड हम बात करेंगे इसके बाद कि उनका एफ़र्ट सिर्फ फुटबॉल पिच से रिलेटेड नहीं है, उनका एफ़र्ट और भी चीज़ों से हैं, विच इज़ वाई आई थिंक दे डिज़र्व ऑल द प्लॉडेट्स. लास्ट मैच डे पे डिसाइडेड था बलोच FC वर्सेस हुमा FC, जो इस्लामाबाद की टीम है. इट वाज अ विनर टेक्स ऑल, एंड बलोच FC won that 2-1. पहले तो अली, B डिवीज़न फाइनली पाकिस्तान में फ़ुटबॉल देखने को मिली है. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि बी डिवीज़न फाइनली रीस्टार्टेड, बिकॉज आखिरी बी डिवीज़न हुई थी 2014 के एंड पे, जिसके अंदर I think Pakistan Navy and then Baloch FC Nushki got promoted for this one, for that tournament. और फिर एक बाद में there was a weird, 4-5 years के लिए कुछ नहीं हुआ था because of the political dispute in the PFF due to 2015 elections. But then PFF decided to expand the Premier League with a single one-off playoff qualifier, जिसमें 4 more teams got promoted. I mean, that was weird. But मुझे खुशी इस बात की हुई है कि the PFF league has finally begun. It actually started back in March, but coronavirus की वजह से, when the pandemic actually it had begun in March, because initial March के अंदर फिर qualification groups थे कुछ, department legs के भी, club legs के भी. But then in March, COVID happened, and then everything got stopped down because हुकूमत ने फिर stopped all sporting activity to happen until sometime in August में कहीं जाके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अलाउ करना स्टार्ट किया था कि लोकल डोमेस्टिक लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के, वो अगस्त के बाद ही स्टार्ट हों. तो PFF लीग, आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स दे फाइनली कंक्लूडिंग दो. और अब ये आजकल डिपार्टमेंट लेग चल रही है, एंड बलोच FC हैव वन. कांग्रेचुलेशंस टू देम बिकॉज दे फुली डिजर्व्ड इट. 7 साल बाद दे रिटर्न टू द पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिकॉज दे गॉट रेलेगेटेड इन 2013. Or they're back again, and and this time, this is the first time the PFF league has actually been broadcast on live stream in most cases. पहले नहीं होता था. well, then again, तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की मैचेस नहीं होते until माई कुजू और फिर ये लाइव स्ट्रीम जो इंटरनेट पे चलती हैं, they became reality. Speaking of the fact कि अब फाइनली लाइव स्ट्रीम भी हो रही है, फाइनली बड़ी देर बाद B डिवीज़न हुई है. ऑब्वियसली आपने काफ़ी सालों से पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को कवर किया इन योर कैपेसिटी एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ footballpakistan.com, और आपने देखा भी होगा पिछली B डिवीजन्स किस तरह की हुई हैं. हाउ डिफरेंट हैज़ दिस वन बिन इन टर्म्स ऑफ PFF की ऑर्गेनाइजेशन, इवन क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, और सारा कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह का भी आपने डिस्कस किया, द वे इट हैज़ बिन हैंडल्ड बेसिकली? देखें, जितने भी जो PFF लीग्स की पिछले जो इवेंट्स होते थे सेकंड डिवीजन या B डिवीजन के,
they mostly followed the same kind of format. There was one department leg जिसमें departments या जो registered football clubs थे who had like registrations with the SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan. PFF के old rules के मुताबिक, if you are registered with the SECP as an entity, as a formal, Yeah. formal entity, PFF is willing to take that into account and call you a department. Karachi United को देख लें आप, Yeah. they are registered with the SECP. Masha as well. Masha United as well, जिनका उनकी जो मालिकान है, they are related to the Shahid Afridi Foundation. So it's also a Shahid Afridi Foundation project as well, using sport and football to empower underprivileged communities. For example, Masha United Faisalabad की है. As far as football quality goes, ज़्यादातर पिछली भी divisions जो थी, they used to be quite small, short. I mean, they would had like 4-team groups or 5-team groups, maybe have a qualification round initially. So it's still a bit haphazard. It still, at least, still leaves something to the imagination कि क्या होना चाहिए. Ideally speaking, it should be just one complete league. Like you have 10 teams or 12 teams play who at least pay each other once. Like कम से कम 10-12 मैच तो हो, or twice अगर हो सके, if they have a central venue and whatever it is. Like कम से कम you see the gradual the quality of football come and prevail. फर्क सिर्फ इस बात का था कि this time you had a couple of interesting Karachi United, of course, who have been involved in Karachi football youth development, especially for the last 15-20 years. They are finally looking good to at least try to make a claim for promotion spot. But as far as the club leg goes, you had your teams from Balochistan, you had Baloch FC Quetta, you had Young Ittifaq FC from Chaman, you had other teams from across the country. You had GLAL from Thatta. They won the Sindh qualifiers and then they got promoted to like 4-5 team qualifier किया था back in March. इन्होंने Sindh FA ने, and then GLAL from Thatta qualified for that one. You have Huma FC, who are basically one of the best clubs in Islamabad. They take part in the Islamabad Football Association A division, जो उनकी main top division league है. There's A division, then there's B division, and they're probably a C division as well. इसके साथ साथ there was Wahab FC from Lahore, जिनके मालिक हैं हाफिज सलमान बट, जो कि पुराने PFF के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और जमात इस्लामी के पंजाब लेवल के बड़े renowned शख्सियत भी हैं. They were an ex-Premier League club as well, but they got relegated, I think, in 2014 or 2015. They got relegated from the Pakistan Premier League, so they were always there. As far as quality goes, I think it was always going to be expected that jo Balochistan clubs, that they will have a little bit extra compared to the rest of the country. But Huma FC, I was impressed by them because they had a couple of players from Chitral. Khaliqo Zaman, jo unka main striker tha, he's from Chitral. Yeah. They had some players from Islamabad, they had some players from, I think, Gilgit-Baltistan, etc. So that kind of, football experience brought them on board. And they were in it for the long haul. But unfortunately, things went out of their hand, and, Baloch FC prevailed because of, sheer brute force of, the history which Baloch FC has in terms of being one of the perennial yo-yo clubs from Balochistan. They get relegated, but then they come back again after a couple of years. They get relegated and come back again. Yeah. So, that kind of experience always helps. Yeah, for sure. And उसके अलावा apart from the level of football, PFF का आपके ख्याल में उन्होंने सही तरह organize कराई है? Was it a good experience from someone looking from the outside in? मतलब कि जो streaming वगैरह भी and all of that, I think that was a good touch. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि मैं समझता हूँ जितना जल्दी आप इन चीज़ों को आप लाइव ला सकते हैं, ताकि कम से कम लोगों को आगाही हो कि पाकिस्तान की फुटबॉल में हो क्या है, what kind of football they play, that's good. And even, if you look at the MyKuju, viewers list, जो PFF के पेज पर जो उनका official बना हुआ है, in which they stream these matches, easily 500, 600, maybe even 1,000, 2,000 people are watching those games in certain cases. Even to be honest, मैं क्योंकि I've this is part of my job. I've been trying to keep tabs on all of this. So 5,000-6,000 bhi टप जाता. And there was one match in which 20,000 टपा था, which was insane. That was crazy. So इसका ये मतलब है ना कि people are really looking forward to it, because you have to remember that many of these teams belong to typical football hubs in the country. ठीक है, Wahab and GLAL might not be the most obvious things, but Chaman ki Young Ittifaq ho, Baloch FC Quetta ho, and Huma FC Islamabad ho. I mean, people follow these teams, and of course, people want to be in touch with what's actually going on. And of course, Lailpur FC from Faisalabad, these are football hubs. Yeah. So people will, जो ज़्यादातर जहाँ के लोग ये football खेलते हैं, they know these teams, or at least they know a significant number of the players over there. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. Organization के लिहाज से, well, sure.
PFF, the NCD normalization committee, I think decided to use the old format which was there because अगर आपने refresh अपने पूरे इस format को change करना है ना, in terms of who gets in, how to get qualified, and etc., how to make it into a foreseeable event, ये जो elected PFF इंतजामिया है, जो elections जब भी होते हैं sometime at the end of this year, if not early next year, वही कर सकती है. NC probably just said कि यार चलो कम से कम B division तो हम करवा देना. There are a couple of departments here. There are a couple of clubs here who are already, eligible to play in the, PFF league. We can probably hold a qualifier here and there, जो किसी और जगह से आना चाहते हैं. But, they just stuck it in, and I think it's fine. It can definitely improve, and it should improve with the passage of time. You want more teams to come in. You want to have आप चाहेंगे कि एक ऐसा system बने, कम से कम there should be a C division as well, a third division. Yeah. के अंदर it should be pure clubs. जिसमें आपके there should be something, I mean, you can start from a district FA level की league हो, then you have an inter-district called playoff, and then they go to the provincial leagues or the regional leagues. Then whoever wins the provincial leagues, they get to, depending on their quality, either get straight into the B division or they play in the C division. इस तरह का होना सिलसिला तो अच्छी बात है, but that's a long-term process. The organization और बेहतर हो सकती है, but I think given the time constraints, given the COVID situation there was, I think it was fair. I mean, मैं PFF की organization पे I don't find तनकीद मैं ज़्यादा नहीं करना पसंद करूँ, because it's उनकी भी मजबूरी आप समझें, उनकी भी आप compulsions को आप समझें, COVID वगैरह सब कुछ हो. हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि streaming को improve करना चाहिए, because कभी-कभार ना खास तौर पे कराची के जो matches थे, sometimes the stream would just disappear and you would be refreshing the screen. जो आज का मैच हुआ था, exactly, कराची यूनाइटेड वाला 60 something minutes के बाद वो खत्म हो गई थी, because internet का issue है ना कराची में कुछ इलाकों के अंदर. तो having a reliable internet connection in these places, that's something which the organizers can definitely do, ताकि कम से कम लोग आराम से मैचेस को without interruption देख सकें. Equipment बेहतर करें, get some better cameras for this, because अभी तो आप सिर्फ फोन को उठाकर ना आपने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, ट्राइपॉड पर रखा है, इस तरह फोन के आप लगा के मैच देख रहे हैं, तो इट्स अ बिट cumbersome, isn't it? तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकती है, बहुत हो सकती है, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. एग्जैक्टली, आई थिंक गिवन द कंस्ट्रेंट्स और गिवन के शॉर्ट टर्म एकदम से एनसीबी क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मैंडेट पे ऑपरेट करी, उस हिसाब से आई थिंक क्रेडिट जाता है टू डैनी लिमोनेज एंड द मीडिया टीम, शब्बर एंड असम, द पीपल हु वर ऑपरेटिंग इन लाहौर एंड कराची. उसके अलावा कमिंग ऑन टू द मैच इटसेल्फ, क्लब लेग का जो डिसाइडर था, व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट? आपके ख्याल में was it a great match that lived up to its billing? मैं बल्कि एक आध मैच पीछे जाना पसंद करूंगा. I think the crucial match which was the game changer was involving Young Ittifaq. First was when Young Ittifaq lost to Huma FC, जिसमें Khaliq Zaman was their main star for them one. Because जब PFF B division की PFF league की club leg start होती तो Young Ittifaq were on fire. I mean, they had a very good momentum going. जो striker है Sanaullah, he scored some absolute blinders of a goal. Scored a hat-trick as well. Scored 2 hat-tricks, ठीक है. और Sanaullah का जो opening goal था against Baloch FC Quetta, I would say that was the goal of the tournament. जिस तरीके से उसने short corner की तरफ से बॉल ली, he swiveled down and then he just lobbed the ball over the goalkeeper. That was just pure brilliance. और आप ये माइक उजू पे उस मैच स्ट्रीम पे आप जो यंग इत्तेफाक का जो मैच था, जो पहला गोल था, वो आप देख सकते हैं. It's absolutely mind blowing. मसला ये हुआ कि within a couple of minutes after taking the league, everything went down the toilet. Because एक bad challenge होता है, it was a rash tackle by the way. I mean, the Baloch FC के player ने एक बड़ा rash tackle किया and on a Young Ittifaq player, and then he hit out and he kicked the guy. He was sent off for a red card. That was the first thing. और उसी दौरान जो player Baloch FC का player जिसको ठुड्डा लगा था, who got kicked for his tackle, एक और Young Ittifaq का player and casually kicked him too out of frustration, and he got sent off. So that was the crucial time because उस match से पहले Ittifaq lost to Huma because Khaliq Zaman and everyone else, they were really pumped up for that one. Young Ittifaq lost the plot that time. तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का. And then Baloch FC, thanks to Zahid, thanks to their squad that they have, thanks to जो उनके coaching नाम में था, they grabbed the game by the scruff of their neck. When you're playing against 9 teams, you're supposed to score, and they scored, and they played, and they went back up their game. फिर जब आता है ना आखिरी मैच Huma FC के साथ, the decider, मसला ये था Khaliq Zaman got suspended for a second yellow card because remember there's only 5 games you can play in the club leg, because remember it's a short league, unfortunately. इसको expand आप कर सकते हैं बाद में. I think he got a yellow card against Wahab, and they only beat Wahab like
2-1 I think, Yeah, or double yellow, yeah. 2-1 double yellow की वजह से he got suspended. So they were on the back foot, but they took the lead early against Baloch Yeah. FC. They took It the was a lead after good just goal, 2 very minutes. good goal. It was a good goal. But चूंकि Baloch FC का एक था ना कि you have to win this game, and they had the experience, they had the strike force, they just need to get a lucky break, and they got a lucky break because जो उनका equalizer था, that was a stupid mistake by the Huma FC defense. Yeah. वो एक regulation pass था, cross था, he could have just kicked it out for a corner kick. He just और बल्कि कीपर लेने आ रहा था उसको. There was a lack of communication between the defense and the goalkeeper, and this is a reality in Pakistani football because ये जो आप देखते हैं ना, बल्कि मैं इसके पे थोड़ी देर पे आता हूँ, वो equalizer मिल गया, Zahid scored that equalizer, and then because Baloch FC were good enough to qualify, get promoted based on a draw because they had better goal difference because of the way they smashed Young Ittefaq when they went down to 9 men, but they just kept on going for the win. ठीक है, Huma got chances, but Baloch FC created more chances, and they should have been 3-1 up or 4-1 up in certain cases because of lack of good finishing. But then they won 2-1 in the end. And Baloch FC are they've got the experience playing at this level, and they probably should कि भाई देखो, they've justified their stereotype कि भाई बलूचिस्तान का क्लब हो और आप हमारे खिलाफ खेलें इस लेवल पे, ये हमारी गेम है बेटा, और किसी की गेम नहीं है. रही बात इसकी की क्वालिटी के लिहाज से, I mean it was a good game, but make no mistake about it, you could see the gulf in class because जिस दिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल टीवी में ब्रॉडकास्ट होने लग गई ना, पहले 10 मिनट आप कहेंगे वो दैट्स अमेजिंग कि पाकिस्तान की लीग इन पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल आ रही है. 15 मिनट बाद आप कहेंगे माय गॉड, हम इस लेवल पे खेलते हैं. The kind of football you see watching Champions League and Premier League and La Liga and Serie A and Bundesliga etc. and the World Cups and European Championships etc. जब आप पाकिस्तान की फुटबॉल को आप देखेंगे ना टीवी पे तो आप सर पकड़ेंगे फुटबॉल के उस टैक्टिकल और उस लेवल के हिसाब से we're behind like 30-40 years आराम से. वो जो आप फुटबॉलिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं अभी स्टेज पे, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, हाई प्रेसिंग, गुड ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल फास्ट पेस फुटबॉल, वो तो बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट लाइक बाईपासिंग मिडफील्ड आगे. मैं टैक्टिक्स की बात, टैक्टिक्स तो ऑब्वियसली है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कोऑर्डिनेशन जो होती है बिटवीन योर प्लेयर्स. हमारे डिफेंडर्स बदकिस्मती दे आर स्टैटिक कोन्स, देयर इज नो, क्या कहते हैं ना, देयर इज इम्प्रॉपर मैन टू मैन एंड जोनल मार्किंग, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गोलकीपर टू हिज डिफेंस, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिडफील्डर्स एंड द स्ट्राइकर्स एंड वाइस वर्सा, एंड मेनी ऑफ इट शोज. अब वही बात है ना कि Baloch FC got that experience, they had the reliable hitman up front, and he was causing problems to Huma's defense. He was getting behind their lines, he was pushing them and creating space. So Mohammad Zahid Baloch was an absolute gem for them, and he was the top scorer, and he fully deserves to be, because they prevailed in that one. But when they reach the Premier League, remember these are yo-yo clubs, so they will face the likes of KRL and Army and Air Force, the likes of Swiss Southern Gas Company. Relegation, is going to be a reality for them. They'll be in a relegation dogfight as they always are. Yeah, I'm going to come on this in a second क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात है जो करनी है कि क्लब टीम्स का आगे क्या, how can they compete with departments और आगे इनका what's the solution for them moving forward. But उससे पहले I think मैच के बीच में you raised some very good points. For people who don't know, I was at the match personally. मैं गया हुआ था, उसके बाद I had the honor and privilege of conducting post-match interviews with a couple of the players and Baloch FC's coach. तो उनसे जब मैच के बाद बात हुई, ये बहुत एक जो है ना आई ओपनिंग चीज़ थी. अब Baloch FC, पहले तो बात ये है कि Huma FC के कैप्टन से बात हुई, इमरान अली. ही रेफरेंस द फैक्ट कि खलीकुज़्ज़मान वाज आउट एंड आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर देम. ही वाज लाइक कि आपकी स्ट्राइक फोर्स जब कोऑर्डिनेशन, लाइक ओके द न्यू गाय हूएवर इज़ द सब्स्टिट्यूट, क्वालिटी है बट एक कोऑर्डिनेशन भी होती है अटैकिंग वाइज, वो एकदम से ख़त्म हो गई थी. उसके अलावा व्हाट वाज टेलिंग वाज कि जब मेरी बात हुई मोहम्मद जाहिद बलूच से, हु इज़ द टॉप स्कोरर लाइक यू रेफरेंस्ड, regardless of the fact कि अभी ही वो प्रमोट हुए थे and it should have been a cause for celebration, the first thing he said was कि भाई हम प्रमोट हो गए हैं लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्लब हैं, हम अपने ख़र्चों पे आए हैं, हमारी किसी ने सपोर्ट नहीं की और अब हम वापस जा रहे हैं और हमें लाइक ठीक है खुशी तो हुई है लेकिन क्लब्स क्या ही करें. सो आई वांट टू कम ऑन टू दैट राइट नाउ कि द सैड रियलिटी फॉर क्लब टीम्स इन पाकिस्तान, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, खुद ही से आए हैं, बेस्ट प्लेयर्स इनके जो हैं वो डिपार्टमेंट्स ले जाते हैं.
how can they cope? Like, say, are they doomed for relegation? These clubs are always going to be doomed for relegation. They're usually, अब off season के अंदर, if Railways or National Bank or Karachi Port Trust, KPT got relegated, खैर, if any of the other department decide to say कि यार ये player अच्छा है, let's get him on board, especially if they're quite young. Zayed seemed to be in his late 20s, पक्की उम्र का लग रहा था, और उनकी आप players की आप शक्ल और उनकी आप physique देखें, they're the kind of people who've gone through the rough and tough nature of football in Balochistan. Clubs बलूचिस्तान के अंदर, खासतौर पे इन इलाकों में, चाहे वो बाकी इलाके भी हों जहाँ फुटबॉल खेली जाती है, देयर उनकी लीगल स्टेटस सिर्फ ये होती कि वो सिर्फ अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, प्रोविंशियल एफए के साथ रजिस्टर्ड होते हैं. They are not entities in terms of the commercial sense, in terms of if they are registered from the Societies Act, or if they are registered with the SECP. Do they have any board members? Do they have any shareholders? Do they have a reliable source of revenue which they can then declare to the authorities over there? They don't. They rely mostly on invitational tournaments. जिनको मैं, not to denigrate them, but ये जो डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऑल पाकिस्तान या ऑल बलूचिस्तान डब्बू खान यादगारी फुटबॉल टूर्नामेंट, that's where they rely upon, because जो prize money इनको मिलता है, they go and play in places in like Gawadar, they go to places in like Karachi, they go to places like in Bannu and Peshawar and Tank, etc., Quetta. ये जो minor tournaments हो रहे होते हैं, इनका जो prize money होता है, they are the ones that rely on them, but चूंकि इनके पास कोई regular source of revenue नहीं है, most of them, they don't have their own stadiums in certain cases. Quetta में तो वैसे भी इतने ज़्यादा clubs हैं, but there are only a couple of playing grounds. चमन में भी यही हिसाब है, but there are a couple of grounds हैं जहाँ एक दो clubs का exclusive आप right समझे, but it's not belong to them, वो public places हैं सारी. They don't have their own grounds, ठीक है? Prize money जो इनको हासिल होता है, जो इनके पैसे वैसे मिल जाते हैं, वो उससे कुछ ना कुछ खर्चा पानी हो जाता है. और सबसे बड़ी बात ये है कि they have no real source of revenue. और एक और बात भी, जब जाहिद का जो गम की बात कही थी कि भाई खेलना बहुत मुश्किल है क्लब के लिए, ही वाज टेलिंग कि भाई देखें हम चले तो जाएंगे, लेकिन आखिर में फेंटी हमें ही पड़नी है, because some of the players might be, like I said, they don't have any contracts. They're not a legal entity, apart from being a registered club. अपने खर्चे पे आए थे all the way to Lahore. अपने खर्चे पे आए हैं. To do or die, मतलब, और वो भी के end पे वो even if they do it, they are essentially doomed. Like promotion के बाद भी they are doomed. Yeah, they're doomed, because अब वही बात है ना कि they will go back and they might try to approach the government, they might try to approach some pittance कि यार हम खेलने जा रहे हैं, कुछ तो हमारा खर्चा पानी पूरा कर दो. तो अब ये जाती है ना कि अब हुकूमत के पास डिपार्टमेंट्स पहले से पड़े में हैं, तो बंदा पूछे कि भाई आप चलें, क्वेटा से आपका ताल्लुक है, getting local businesses and traders and businessmen etc. on board, even politicians on board would be a good thing for them, ताकि कम से कम उनका बेसिक जो खर्चा across the season जो होना है अगला, in which they उनके कम से कम traveling expenses जो है they get covered, उनको कम से कम कोई ना कोई एक wage basic मतलब खाने पीने का खर्चा cover हो जाए. But if any player of them gets an offer from a department, they'll just quit and just go and join that department to play for them, because उनको तनख्वाह मिल रही है. Clubs don't offer anything. तो पाकिस्तान का club culture, if you rely mostly on these Dabbu Khan Memorial tournaments and you are not trying to reform with encouragement from the PFF and the government and all these stakeholders, कि कम से कम अपने आप को थोड़ा stabilize तो करें ना, you're essentially remaining amateur clubs. तो आप प्लेयर तो सिलेक्ट कर सकते हो, प्लेयर तो आप टूर्नामेंट में कोई नजर आ गया, आपको क्वेटा से या नुश्की से या चमन से आप उसको अपने पिक तो कर लिया, बट यू नॉट ऑफरिंग हिम एनीथिंग अनलेस यू आर सेइंग हे हमारे लिए खेलो, टूर्नामेंट में हमारे लिए करो, शायद तुम्हें कोई डिपार्टमेंट ले ले. तो क्लब रिफॉर्म्स का करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप क्लब्स में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, ये जो सारे जो फ्रेंचाइज लीग की इस मुल्क में बात करते हैं, जो यार देयर इज एन एग्जिस्टिंग क्लब कल्चर इन दिस कंट्री, you should make your own team, register it with the SECP and the PFF and try to enter the B division as a department, or you can see a local club in that area who's got a reputation and invest in them. But उसमें भी उनको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, and maybe club owners might not be wanting anyone up from the outside to coming in, but it's a tough game for them. It's tough for them because Muslim FC चमन जो आजकल ऑल पाकिस्तान जो शहीद जिलानी खान टूर्नामेंट चमन में चल रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज मोहम्मद ईसा खान कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन, their owners are related to the Jamiat Ulama Islam Fazlur Rahman party, ठीक है, right. जब भी वो जाए जमात JUIF का झंडा साथ होता है. ANP जो क्या कहते हैं आपका जो अफगान FC चमन है,
they've got people from ANP, they've got people from Pashtun Qawmi Awami Party because they represent, Pashtun nationalism. तो ये भी एक identity aspect चलता है. Some of these clubs, because of political backing, because of some revenue generated by winning tournaments here and there, they can probably survive a bit, but they still are relegation fodder when it comes to. Definitely, I think अब इसके अंदर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्योंकि इसके अंदर तो ठीक है, बाहर से अगर जो फ्रेंचाइज लीग की बात करते हैं वो तो आके चले इन्वेस्ट, अगर वो तो एक अलग बात है ना कि उनको कि आप आके करें. हाउ कैन डू यू थिंक कि कोई पॉसिबल रियलिस्टिक एवेन्यू है कि आप क्वेटा की फॉर बलोच एफसी की अगर सिंगुलर बात करें एक स्पेसिफिक, तो क्वेटा की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको किस तरह कन्विंस किया जाए कि भाई आप फुटबॉल में आके इन्वेस्ट करें? डू यू थिंक हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन? इज़ दैट एन ऑर्गेनिक प्रोसेस कि वो कहते हैं जी भाईजान हम कर देते हैं, और उनको how will that end be reached basically? I think जब मैचेस ब्रॉडकास्ट होंगे ना लाइव, जब मैचेस लाइव स्ट्रीम कम से कम लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए उनकी, these clubs try to gain a kind of a, they raise their social media game. I mean, I don't know if Baloch किसी के भी accounts नहीं है. I've searched. हाँ, तो अगर कोई मिल भी जाए, you don't know if it's real or not. Yeah, exactly. तो अगर कम से कम बेसिक, अब आजकल क्योंकि टिकटॉक का दौर है, टिकटॉक got unbanned in Pakistan, which is a very good thing because China का डंडा है. YouTube तो खैर 3 साल तक का मन बैन ना कर सके, China ने डंडा दिया, कहता यार निकालो उसको. तो if they have a basic social media game, तो जाके लोगों को पता चले कि भाई क्या है, कि ये हमारा ऑफिशियल पेज है, ये हमारी टीम है, ये हमारा मैच चल रहा है, ये रिजल्ट चल रहा है वगैरह, कम से कम लोगों को आगाही हो. But I guess one way of doing it is that because they're in the Premier League now and the match is really broadcast, at least live streamed, they can then approach the business community in Quetta, या जो बलोच businesses जो own करते हैं, या जो बलोच politicians भी, कि सर हम टीम जा रहे हैं, आप हमें स्पॉन्सर करें. हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें इतने पैसे दें, कम से कम आप थोड़ा हमें कंट्रीब्यूट करके दे दें, कुछ आप हमें कंट्रीब्यूट करके दे दें. हम आपका नाम लगा देंगे कि भाई देखें, हम अपने शर्ट के सामने आपका स्पॉन्सर लगा देंगे कि भाई ये हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं वगैरह. These kind of things. You have to start small, and you have to at least show a kind of product which you can get though. But eventually, आपको पाकिस्तान का डोमेस्टिक लीग सिस्टम जो है, क्लब्स का आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज these clubs, whether we like it or not, are amateur clubs. ये प्लेयर ले लेते हैं, बट द प्लेयर्स आर सेइंग कि यार देखो अपने खर्चे पे तो आ गए, बट देन क्या करें आगे फिर जाके ना, बिकॉज सम ऑफ देम आर डेली वेज लेबरर्स, सम ऑफ देम डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सम ऑफ देम probably are educated, like यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होगी, दे जस्ट प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज दे वांट टू प्ले फुटबॉल, बट दे लुकिंग फॉर कि यार अगर पुलिस में नौकरी मिल जाए ऑन अ स्पोर्ट्स कोटा, या नेशनल बैंक में मिल जाए, या हम कराची पोर्ट, बिकॉज उनके लिए वो सेट है, देन दे आर सेट फॉर लाइफ सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उनको वो एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं. तो अब जिस तरह नताशा राहिल ने आपकी प्रीवियस एपिसोड में बात की थी कि डिपार्टमेंट्स के इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री इज स्टिल एक्सटेंड, they decided to just end their sports team and their football team just to cut cost. Or the departments be not a long term solution because they really don't know what to do. They're just saying it, oh, okay, चलो हमने employ कर दिया, but then when they cut costs, sorry, you're out. सबसे पहले यही बाहर जाते हैं, सबसे बड़े एक्स्ट्रा कॉस्ट ही होती है, अच्छा ये एक्स्ट्रा इसको निकालो. बिकॉज आप परमानेंट नौकरी दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मर्जी है ना कि कहते हैं कि यार देखो प्राइवेटाइज करना है, से नो यू कटिंग कॉस्ट, यू आर आउट. तो something has to give, and that is a process which will take a long time to do so. उसके अंदर वही बात है ना, AFC club licensing एक criteria जो कि you can actually look up online and see कि भाई क्या expect करते हैं कि clubs में हो क्या, to justify कि भाई do you have an academy, do you have shareholders, do you have board of directors, do you have a source of revenue कि आपकी owners कहाँ से आ रहे हैं, आपका अपना ground या stadium है, इस तरह कीजिए ना, you start from these small bits and pieces. तो most clubs, अगर अचानक हम AFC club licensing की हम requirements impose करें on clubs, none of them would qualify for the PFF league even because they don't have those resources. But वही बात है ना, you have to, इनको कम से कम clubs को भी कहते हैं कि हमारे support नहीं करता. मियाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल हमदर्दी करता हूँ, but for crying out loud यार, you are supposed to be a Premier League team. Show that you're a Premier League team by at least having a public presence. हाथ पे थोड़े से तुम्हारे, हाथ पे कम से कम आपके पब्लिक इमेज तो डेवलप हो ना, कि आपका फेसबुक, यू कैन मेक अकाउंट मेकिंग ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक इज फ्री. आप तस्वीरें खींचे, आप शेयर करें, आपने कोई कुछ नहीं, तो कोई बंदे, किसी बंदे ने पैकेज लेके आया, डेटा क्रिएट किया, आप एक लाइव स्ट्रीम करके आप एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दें ताकि लोगों को आगाही हो कि आप हैं क्या. देन बिजनेस स्टार्ट कमेंगे, कहते हैं कि हम प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, देखिए सर हमारा फेसबुक पेज, हमारे इतने 1000 लोग फॉलो करते हैं, आप हमें स्पॉन्सर करें, है, ये है, वो है, सपोर्ट है.
you cannot rely completely on these Dabbu Khan Memorial tournaments. Definitely. I'm sorry to say. No, That's it's the reason why perfectly reasonable. Baloch Yeah. FC will be relegation fodder. Make no mistake about it. Yeah, I think I mean the most we can do is wish for a miracle, but I think realistically अगर देखा जाए तो I think you've hit the nail on its head. कि this is the sad reality for club teams in Pakistan. ज़्यादातर obviously कसूर पाकिस्तान के football infrastructure और lack thereof का है, but obviously there are obviously things that clubs can do themselves जो खुद भी कर सकते हैं to better their situations. And I think that's what we hope for moving forward. Everyone, thank you so much for listening. Ali, thank you so much for being a part of the show yet again. Needless to say, आप हमेशा जो हैं, you're always invited back, free to come whenever you please to talk about Pakistani football. Lastly, everyone, do check out the post-match reaction video जो हमने निकाली थी. I think that's a real eye-opener into both clubs and the situation of clubs in Pakistan. And until next time, take it easy.